the CSS file like this one, and we just start talking about writing the CSS file in the HTML page. We call it as an inline CSS, right? So thing is that what the first story we have worked out, where we have to write down the line of code, inside which tag? Yes guys, inside which tag? Style tag. Okay, we have to write down the code inside the style tag, and style tag style tag always present in Head tag. head tag. Style tag always present in head tag. That the story we have worked out, that the story we are executed in what we are just executed for the execution of simple thing that we talk about this HTML line of code. Now let's move ahead and let's work out for the more stories. Now what the thing I want to do today I just want to go for the execution of the simple story, that I just want to go for execution of the tables as well. Okay, and what the things we have worked out till right now, we just comes to know how the each and every folder will work, how each and every file will work, what are the ways to be work out for this execution, how we can write down the CSS line of code, and how we can do it. So we just work out for background, we just work out for many more things, like in which we just comes to know how the things are going to be changed, how the things are going to be work out, how we can customize the tags, how we can create our own tags. That the story we have worked out. Now let's move ahead and let's talk to the next stories. Now I want to play with table. Okay, last time I told you about the classes as well. Have you remember? Yes, sir. Okay, in the classes we comes to know की जर आपल्याला एखादी टॅग कॉमनली अप्लाय नाही करायची आहे, ती चेंज करायची आहे, तर फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू डिक्लेअर द क्लासेस. Okay guys, so whenever you want to go for declaring the tags not in a same way, means what? Here if I write down h1/h1, what the story getting to be work out? That h1/h1 need to be execute everywhere ना. ओके, मग h1/h1 तुम्ही कुठेही लिहिलं तरी तो तेच एक्झिक्यूट करायचा. माझं म्हणणं काय आहे की आपण तसं न करता जर त्याला काही वेगळ्या वेनी चेंज केलं तर आपण करू शकतो का? म्हणजे मी एका ठिकाणी h1/h1 वापरेल, दुसऱ्या ठिकाणी पण h1/h1 वापरेल, पण दोघांमध्ये डिफरन्स असेल. ओके, सो आय कॅन मेक द डिफॉल्ट इन दॅट बाय युजिंग क्लास ॲक्टिव्हिटी. ओके, वी जस्ट नीड टू राईट डाऊन ओवर देअर अ क्लास. ओके, we just need to write down over there the class, that the thing we are know. So if you want to create a class, we have to write down h1.a, कुठली टॅग घ्या जी कस्टमाइज करायची आहे, .a लिहा, b लिहा, काही पण क्लासचं नाव लिहा, and just we can create the class and we can just call that one into the any tag. ओके, म्हणजे h1 मध्ये मी क्लास इक्वल्स टू माय क्लास लिहिलं तरच तो दिसेल, नाही तर दिसणार नाही. राईट गाईज, हॅव यू क्लिअर द लास्ट कन्सेप्ट? Yes or no? Last one is clear now? Akash? Yes. Should I explain it again? Yes, sir. Okay, chalo, let's see. What I want to say, suppose आपल्याकडे h1/h1 नावाची एक टॅग आहे. Okay, we have a tag with the name of h1. So if I write down here h1 वेलकम टू आयबेस /h1. ओके, मी काय केलं इथे वेलकम टू आयबेस लिहिलं आहे आणि /h1 लिहिलं आहे. ओके, सो व्हॉट आय वॉन्ट टू डू, आय जस्ट वॉन्ट टू अप्लाय द बॅकग्राऊंड कलर टू दिस. व्हॉट इज द लाईन ऑफ बॅकग्राऊंड कलर? येस, Background hyphen color colon बॅकग्राऊंड हायफन कलर कोलन हॅश 6 डिजिट नंबर. बरोबर. आता जर मी h1 ला लिहिलं हे आणि आय जस्ट कमिंग इन टू द फोल्डर अँड आय एक्झिक्यूट दिस माय पेज. सो व्हॉट हॅपन? आकाश, व्हॉट विल हॅपन? विल इट अप्लायड ऑन h1? समथिंग इज मिसिंग. BACK बॅकग्राऊंड कलर या स्टाईल/स्टाईलमध्ये पाहिजे, h1/head/headमध्ये लिहिला आहे. हां, विल इट अप्लाय ऑन टू द h1? येस, Yes, sir. yes, sir. इट विल अप्लाय ना. हा काय होईल? अप्लाय होईल ना h1 वरती. ओके, सो व्हॉट द प्रॉब्लेम ऑफ दिस थिंग्स, आता मी जेवढ्या काही h1 लिहेल, इफ आय राईट डाऊन एनी नंबर्स ऑफ h1, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, इट विल अप्लाय applicable on each and every h1, right? Yes. Yes, Okay, sir. ma'am. What I want to do, I don't want to apply it on every h1. मला काय वाटतंय,
या प्रत्येक H1 वरती इम्प्लिमेंट नाही करायचं आहे. मला असं वाटतं की मी H1/H1 इथे लिहिलं आहे, तर आय जस्ट वॉन्ट टू अप्लाय इट ऑन द सेकंड वन. I just want to apply it on a second one. Then how we can do this? How we can work out with this? Simple logic is there. Simple logic is there. Just create a class for that. Okay. मग मी क्लास कसा क्रिएट करतो? डॉट देतोय. Let's give the name. Okay. I just write down class 1 or let's say COL. Okay. You can give the any name. Clear what I did? Yes. Okay. Yes, Now sir. I save it and let's see. Now will this H1 is applicable everywhere? No. No. Okay. आता मी याला चेंज केलं आहे and it's not going to be applicable everywhere. हे आता कुठंच applicable नाही होत आहे. It's not going to be applicable everywhere. Okay. मग आता मला फक्त पर्टिक्युलर टॅगवरतीच अप्लाय करायचं आहे, तोच बॅकग्राऊंडवाला कलर. So how I can apply it on a particular tag? How we can work out it on a particular tag? So simple logic is there guys. Simple logic is there. इथे H1 मध्ये मी जातो, class 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 is equals to जे काही क्लासला नाव दिलं होतं आपण, काय दिलं होतं? कोल ना. So I just going to be write down here कोल. Oh. Okay, now let's see. Clear? Akash clear? Yes, sir. But sir, ID लेके भी तो अपन कर सकते हैं ना? आईडी लेके भी कर सकते हो. Okay, but ID in the things what the commonality are not going to be identified properly. So it's easiest way to go for this one. Getting my point? Yes, sir. Okay. So likewise the thing we have to work out. Likewise the thing we have to execute. सर वहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हम लिख सकते थे Yes, एक you टैग can में. write down. You can write down. You can just create this call. Let's say, if I want to create another one. नाही. इथे म्हणतो ना तू हा लिहू शकतो. Yes, yes. लिहू शकतो. See, I have an let's say another let's say call to. Okay. And what I write down in a call to, I want to write down font hyphen size. Font hyphen size colon let's say size colon let's say 70 pixel. Okay. And now I want to pass this class call to. I write down here call space call to. Okay. Now let's see. Got it? Yes, sir. Clear? You can go like this one. Okay. Yes, sir. That's the way we have to work out. That's the way we have to execute. Got it? Okay now? Everyone is clear now? Yes, sir. Okay, now that's about the class we can work out. That's about the thing we can work out. Okay. Likewise the story we have to execute. Now let's move to the next thing. Now we just want to talk about the table tag. Huh? Okay, how we can customize the table tag. टेबल टैग को हम लोग कैसे कस्टमाइज करेंगे, टेबल टैग को हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे. सो लेट्स गो अहेड एंड जस्ट वर्कआउट विद दिस. सो इफ आई वांट टू वर्कआउट विद टेबल टैग, just write down here table table, opening this, closing this. Same way, if you want to create a table, then we have to write down, I hope you remember table. Okay, slash table, sorry. Okay, then within that I am just going to write down tr, let's say table row. Okay, then we are write down here slash tr. Okay, then within that td slash td. Okay, I write down here abcd. So see here what we are getting my point, guys? Yes. Yes, Okay, sir. so I just created here, but it not getting anything here. Just I want to apply border colon 1 pixel. Okay, so if I apply this one, what I am getting, border not applicable to this one. Border directly the column applied to it, I will tell you. So if I want to apply the background color to this, what we can do, background hyphen color colon hash 6-digit number. Okay, so see we got the color. Now if I increase this column,
if I increase this column, see I am getting like this one, huh? If I increase this row, okay, likewise. Getting my point, guys? How we can apply, how we can go? Yes, sir. Clear? Now if I want to apply the border, how I can apply the border? Let's go for this one, because we are not specified it. Border colon 1 pixel solid, give the semicolon. Now let's see, or let's take it as 5 pixel, it will be visible. So see, will it apply? Yeah. Clear, guys? How we can do? Yes. Okay, now simple logic is there. Execute it fast. Just create the table and work out on this. Create the table and work out on this. Go fast, your turn. We are just customize here a table slash table tag. Even though if you want to increase the width of this, how we can increase the width of this? So we can just pass the parameter. Sometimes you need to change the width of width width colon, let's take here 200 pixel. Okay, let's take here 200 pixel, or let's say we can write down directly. If you want to make it like complete table which will cover the complete page, then we can write down here 100%. ओके, तो अब देखिए थोड़ा, इट बिकम 100% ऑफ योर पेज, यानी जितना आपका पेज होगा वही साइज का ये बन जाएगा. सो दैट द थिंग वी कैन वर्क आउट, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग सिंपल थिंग दैट इज अ टेबल स्लैश टेबल. ओके, विथ 100% वी हैव टू राइट आउट. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. हियर इफ आई मेक इट एज एन 50%, what the output I am getting? See, okay now, clear, guys? Am I clear what we have to do? Yes, sir. Okay, so likewise the thing we have to work out, likewise the thing we have to execute. Just we have to go for its execution like this one. Even though if I want to customize heading tag, table head, so we are just said th table head. Okay, table head. Okay, in table head what we need to change? We just need to change the background color sometimes. Okay, in table head, what is the purpose of table head? If you want to describe these headings of the table, we can just write down th/th. Okay, we can just write down th/th/th, like we can work out, huh? And within this I just want to pass the again 3 columns. First one is for, I say, name. Second is for we are just saying like this is for name, second for contact number, third for email. Okay, name, then contact number, sorry, so and TSCT contact, and third one is email. Okay, now let's refresh. We are just getting the 3 columns here. Okay, name, contact, email. Now we have an almost one. I do one thing, I make it proper. Now see, something is missing. Till, what is missing? td/td column/column. Yeah, name, then tr/tr. Something is missing. Table row. Yeah, second table row I have this one. I need to remove this one. Now here we add one more record, td/td. So what is missing? Find out the error. What is सर missing? टीएच टैग ये टीआई टैग के अंदर नहीं चाहिए क्या? No. It's a table head. 3 columns. Okay. What is missing? नेम का एक कॉलम का कोई तो दिक्कत चाह रहा है हम लोग को. ओके, नाउ लेट मी चेक. ओके, व्हाट आई डू, I make it as an tr, and again I make it as an tr. Sorry, name, contact, email, password. Why it giving the space in one column? Is due to the width.
Okay, try to create at your end. Try to create at your end. I just need to check what is an issue. डन सर. Is it getting properly? Table यस head सर. properly. टीआर के अंदर टीएच ऐसे लिया मैंने. या टीआर के अंदर टीएच लिखा तो भी चलेगा. कोई या डू वन थिंग. यस यस माय मिस्टेक हियर. टीआर/टीआर के अंदर टीएच/टीएच. सॉरी. Table head. Table head in the sense it says the column name. Okay, th/th. Normally we are using td/td. Okay guys, clear? See, clear now? Have you cleared this one? See, आप लोगों को, sorry, that is my mistake. At the place of td we have to pass th. th/th. Getting my point? यस. Okay, try to work out. Do it fast. लगता है width को increase करना है तो we have to write down width 50 pixel. Okay, and if I want to apply it for the height, we can also increase the height. Let's say HEIGST height colon 50 pixel. Okay, now see, we can give the proper width and height to this as well. Okay, do it fast. Your turn. To show the text at the center. Yes guys, I want this TR in center. What we have to write down? Can anyone tell me? Using the center text. Use it and tell me whether you are getting the output or not. You can align the things as per your requirement as well. If you want to put the padding in the cells, you can put the padding. You can customize the table as per your requirement. जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को इस कॉलम में प्रॉपर डिस्टेंस देना होता है. जैसे नाउ इट्स कमिंग, ईमेल इज कमिंग, स्टिक टू दिस लेफ्ट साइड, स्टिक टू दिस टॉप, स्टिक टू दिस बॉटम. Okay, you need to keep the distance in that. How we can keep the distance in that? How we can work out? Try to work out. Try to execute. चलो डन. यस सर. Okay. Now, have you done with this text alignment? Text hyphen align. यस सर. Align colon CNTR center. Simple logic is there. क्या करना पड़ेगा? Just we are already know how to align the text as left, as a right and as a center. So ये हो गया left. If I want it at right, RIGST right. So what the thing we are getting? It's getting at the right side. This simple logic is there. If you want to change the color of text, I want to make it as an white. So inside TD, just write down here color colon hash 6-digit number. It will just show the output like this one. Getting my point, guys? Yes or no? यस सर. Okay now. So you can just change the things as per your requirement. That's the way we have to work out. And if I want to highlight the color, see, if I move this onto this row must be highlighted. Then what to do? क्या करना पड़ेगा? Already you know the logic. If I move the cursor on this row will highlight. This row must be highlighted. What to do? Highlight in the sense उसका background color change होना चाहिए.
ओवर करके यस H-O-R. राइट H-O-R. निखिल डन. आकाश can work out TR colon H over. Simple logic is there. TR colon H over. Opening brace, closing brace. You can apply this H over to anything, on any tag. Background hyphen color colon hash. Let's say I want to change to the red. So let's refresh and check. See, getting my point, guys? Have you clear? Yes. Now if I create or write down here any numbers of rows, if you write down here any numbers of rows, what the thing getting to be work out here? If I write down any numbers of rows, see, I'm just putting some more rows here. Okay, now let's refresh. 1 2 3 4 5 like this. See, जिस पे मैं मूव करूंगा उसका कलर चेंज हो जाएगा. Simple logic is there. Background hyphen colon TR colon H over will work like that. And H-O-R property is applicable everywhere ना. आप हेडिंग पे भी इसे वर्कआउट कर सकते हो, आप इमेज पे भी वर्कआउट कर सकते हो, आप टेबल पे भी वर्कआउट कर सकते हो. आपको जिस पे वर्कआउट करनी है उस पे वर्कआउट कर सकते हो. ओके, सो likewise the thing we have to work out, likewise the thing we have to execute. That's the way we can work, that's the way we can execute, guys. Okay, so you just work out with TR colon H-O-R background hyphen color colon hash 6-digit number. Likewise the story we have worked out, likewise the story we have to execute. Okay, now let's come toward the next thing. अब देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, I just want to apply this, जो ये जो कलर के बैंड दिख रहे हैं ना आप लोगों को, I just want to apply to this only even rows. Okay, have no zebra format. एक वाइट होता है, फिर एक कलर होता है, अगेन एक वाइट होता है, फिर एक कलर होता है. अगर मुझे उस टाइप का स्टाइलिंग करना है, इफ आई वांट टू डू दैट टाइप ऑफ स्टाइलिंग, मीन्स व्हाट, आइदर इवन को कलर दो, आइदर ऑड को कलर दो. गेटिंग माय पॉइंट, गाइस? Yes. Okay, so how we can apply that one? For that purpose you have to write down, let's see here, TR colon, just call the property nth child, nth hyphen child child. Okay, nth hyphen child, in bracket just write down even and just change the background color. Okay, so I am just going to put the background color, background hyphen color colon hash 1 2 3 4 5 6, white color I applied. Now what the output we are getting, getting my point? How we can apply for this zebra? Yes or no? No, sir. Not it. See, listen, अब मैं क्या करता हूँ, I do one thing, I remove the background color of this TD tag, text hyphen align, text hyphen, और फिर टेबल का बैकग्राउंड निकाल देता हूँ. Listen, and I do one more thing, I remove this TR colon nth as well. इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ. अब अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो सी what we are getting, everything in a white we are getting. I need to change the color as well. Just one, जो पुराना वाला था उसे मैं चेंज कर रहा हूँ. TD की भी टैग को मैं निकाल देता हूँ. ओके, नो देखिए, ये आपका टेबल है. ओके, वी टॉक अबाउट दिस एच ओवर प्रॉपर्टी. हम लोगों ने एच ओवर के बारे में वर्कआउट किया. क्लियर? अब मेरा क्या कहना है कि यहाँ पे ये जो रोज है, पहला रो का कलर व्हाइट, तो दूसरे का ग्रे, तीसरे का अगेन व्हाइट, चौथे का ग्रे, पांचवे का अगेन व्हाइट, छठवें का ग्रे. मीन्स जो इवन है उनका कलर डिफरेंट आना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? वी कॉल इट एज एन जेब्रा पैटर्न. क्लियर ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? व्हाट वी एक्सपेक्टेड. ओके, सो हाउ वी कैन अप्लाई दैट वन? सो फॉर दैट पर्पज वी हैव ट्राइड ऑन द सिंपल लाइन. अब ये अप्लाई किस पे करना है? तो रो पे करना है. तो TR colon n hyphen child, TR colon n hyphen child, and in bracket I am just going to be write down here even लिख रहा हूँ मैं, opening brace, closing brace, TR colon nth hyphen child in bracket even, and just going to put some background color. जो आपको background color देना है, background hyphen color colon hash, whatever the background color you want to do, you just give that background color. अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ, what is missing, हाँ सी,
अगर ये लाइन में लिखता हूँ तो सी वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6, क्लियर ना? इट विल अप्लाई ऑन टू द इवन नंबर्स ओनली, TR के इवन नंबर पे अप्लाई हो जाएगा. एंड इफ आई मेक इट एज एन ऑड, सी it will applicable onto the odd number only. 1 2 3 4 5. Have you cleared this one? Yes. Okay na? If you want to apply a zebra pattern to this tables, how we can apply? सर कोड दिखाए एक बार. हाँ, we'll show you the code. Wait, how we can apply for this? हम लोग इसे कैसे अप्लाई करेंगे, इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? That's the way we just want to work out. That's the way we just want to execute. Okay? Do it fast now. Your turn. Nth column. Wait a minute. Everyone Yes, sir. Yes sir. done? Okay. Done, sir. Now let's see. Dhanashri done? Are you there? Vaibhav, Palash. Now let's proceed for the next one. Now what I want to do, I just want to apply the horizontal border only. कुछ टेबल ऐसे भी देखे होंगे आप लोगों ने, ये तो हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे दे दिया. कुछ टेबल्स में ऐसा होता है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली उससे सब कुछ होता है. ओके, नथिंग इज देयर टू बी वर्कआउट, जस्ट हॉरिजॉन्टली थिंग्स आर गिवन. ओके, सो हाउ वी कैन डू, हाउ वी कैन वर्कआउट, इन व्हाट वे वी कैन एग्जीक्यूट. तो अगर हम लोग को इसे वर्कआउट करना है, हम लोग को इसे एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर है वो सिर्फ बॉटम से है, तो हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. सो आई रिमूव दिस वन, टेबल में मैं रिमूव कर देता हूँ. एंड वी कैन अप्लाई TH. देखिए अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं TD लिख रहा हूँ. आप लोग एक प्रॉपर्टीज 2 टैग को अप्लाई कर सकते हैं, 3 टैग को अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट यू नीड टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट थिंग्स आर हियर. अब ये TH को भी अप्लाई होगा और TD को भी अप्लाई होगा. गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई चेंज हियर, TH, TD. गाइस समझ में आ रहा है? ओके ना? TH, TD, इट मस्ट बी अप्लीकेबल टू बोथ थिंग. ये TH को भी अप्लाई होगा और TD को भी अप्लाई होगा. देन व्हाट द थिंग वी जस्ट नीड टू राइट डाउन, व्हाट द थिंग वी जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट, बॉर्डर हाइफन BOTTOM, बॉर्डर हाइफन बॉटम कोलन. लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल. ओके, लेट्स से राइट डाउन हियर 5 पिक्सल स्पेस. मुझे सॉलिड चाहिए तो सॉलिड लिखूंगा, स्पेस, जस्ट राइट डाउन द बैकग्राउंड कलर. लेट्स से 98. लेट्स टेक एज एन somewhat different color we want, like 8 9 5 6 7 8. give the semicolon at end. Now let's see. देखिए it just going to be apply into the rows. अब मैं थोड़ा इसे कस्टमाइज करता हूँ. what I do, I just work out with execution. ये थोड़ा निकाल लेता हूँ ताकि confusion ना हो. just remove this one, remove this one. okay, and just write out this. कलर चेंज करना है, बॉर्डर हाइफन बॉटम, विड्थ हाइट डाल दी है, बैकग्राउंड हाइफन कलर भी डाल दिया है. ओके, आई डू वन थिंग सो दैट कि समझ में आए हम लोग आउटपुट क्या रहे. देखिए, गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ये कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ. व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट गेटिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन इनटू द टेबल. हॉरिजॉन्टल line into the table by using simple thing, by using this, just change here 981212. okay, give the semicolon. Let's check. clear guys? Yes, sir. okay ना? likewise we सर can वर्टिकल के लिए क्या करना चाहिए थी? वर्टिकल के लिए आप डायरेक्टली बॉर्डर लिखोगे तो वो भी आ जाएगा. सी हियर व्हाट आई राइट डाउन, बॉर्डर हाइफन बॉटम. हाँ, इसे मैं चेंज कर देता हूँ. सी लेफ्ट. गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. ओके. और अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो क्लियर? Yes, sir. okay, likewise it will work, likewise it will be executed. do it fast, your turn, do it fast. टेबल विथ 10 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड के साथ आपको टेबल क्रिएट करना है.
जिसमें पहले इसमें आना चाहिए आपका नेम नाम का कॉलम, दूसरे इसमें आना चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम, और तीसरे इसमें आना चाहिए रिलेशन नाम का कॉलम गाइस. आई वांट द 3 थिंग्स. ओके, फर्स्ट इज अ नेम, सेकंड इज अ कॉन्टैक्ट एंड थर्ड इज अ रिलेशन. एंड ऐड यूर 10 फैमिली नंबर्स नेम ओवर देयर. 10 फैमिली के नाम आपको वहां पे ऐड करने हैं. इज दैट क्लियर व्हाट यू टू डू? ओके, ट्राई अरे टू. बॉक्स वाला कोड दिखाए ना एक बार. कौन सा? लास्ट में बॉक्स ऐड किया ना आपने. ये सिंपल, वो ts.td उसमें बॉर्डर आपको जैसी डालनी है वैसी, बॉर्डर हाइफन लेफ्ट. बॉर्डर ये निकाल दोगे तो डायरेक्ट बॉर्डर अप्लाई होंगी. इट विल जस्ट लुक आउट लाइक टू बी अ बॉक्स. डू द एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट. करेक्ट. ओके सर. ओके, सो ठीक है गाइस, क्लियर नाउ? Yes. Okay. Yes. So we are just going to be stop for today here. Meet back again on tomorrow at same time. हेलो सर. Yeah, Ajinkya, tell me. सर सेशन अपलोड नहीं हुए. कर दिया ना मैंने, चेक करो. कल किए, लास्ट वाले सेशन अपलोड कर दिए है. आज का नहीं है, सिर्फ अभी ये आज का जो हुआ है ना वो नहीं होगा, वो दोपहर में हो जाएगा. ओके, ठीक है. चेक इट. ओके, चलो गाइस, देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर.